One of our friends sometime back asked a question, why Jutro when there are so many service providers and they are easily available under NFZ? Then why Jutro? And this was a very valid question. And I thought about it and then I recalled my memory from last 1.5 or 2 years because we now complete 2 years in Poland. And I was thinking, why in last 2 years I do not have a family doctor assigned? And then I checked my patient portal and I realized I have applied so many times, and every time when I apply, I get a call from them and in Polish, and neither I am able to understand them nor they are able to understand me. And as a result of which, I could never appoint a family doctor to myself, while it is a very important requirement here to avail medical facility. Please refer to my video, uh, how to assign family doctor in Poland, medical part 1, and I'm sure you will clear all the doubts about this topic. But then after I recalled, and luckily I am an IT professional, so I have the private service provider. But imagine the situation where a lot of people who are not part of IT and they have not opted for private service provider paid by the office. So what they do is NFC in under NFC they can avail you through as their private service providers. So this can be another reason why you throw, and this answers my question. And third most important thing is having the English speaking doctor list in the description of the video. So today after the video, I'm going to share with you in the last of the video about the various English speaking doctor available in various part of Poland, and same will be available in the description of the video. So I think these are the valid reasons why you throw, and again the facilities, the kind of applications, and lot of things which we are going to discuss further in the video. So welcome back to your own channel Thakurs in Europe. And my name is Dheeraj. I'm back with this topic and I will name it as medical part 1.1, which is Jutro. Also in English it's called Jutro, but in Polish it's Jutro and it means tomorrow. And this particular application I came to know about 1 year back when I was literally struggling. I had a private service provider, and when today I have a stomach pain, I call them and they give me appointment after 14 days, which was pathetic. So then I started exploring more option. I sent my wife to this center 1 year back, got appointment in 2 hours, and the way they have handled was pretty good. And after that, I have recommended more than 400 people in last 1 year. And thanks to all those people who visited and who spread my words, as a result of which I got this collaboration for the first time in my YouTube tenure of these 2 years. And this is a sponsored content now, so I have no problem in explaining or uh, announcing it. So let's start our video on Jutro and understand why Jutro, what could be the best thing and how we can register about it. So I'm going to share with you this slide. Welcome to this video on medical system in Poland, part 1.1. As I said, it's a sponsored content, and thanks to Magdalena and Dr. Piotr for supporting the content. As you know that it is a popular POZ service provider, also known as Lekas Podstawowych Opieki Zdrowotnej, called primary care physicians or family doctor, which you can choose here under NFZ with a lot of English speaking doctor. And check description for list of doctors in your area, as I always say in all my video, because I keep up video cannot be edited, but at least description can be updated all the time, and I always update all my videos with latest information in the description. Now why you throw when we have so many other service provider, I have already explained, because it has a lot of English speaking list of the doctor, which I am going to share in the description of the video. So one-stop solution, all management and control treatment by application, and it's very user-friendly. And most of the IT professionals do have the private service provider, but there are other professions also who do not have opted for the private service provider. So they can avail this private facility under NFZ care and without paying extra, and all the facilities which you get from POZ clinic, you get here without paying anything extra. And if you have budget interested or paid tests which are not covered in NFZ, you can use a code called DHERES20 from the marketplace of Jutro, and you get 20% discount. So this is another reason for you to use Jutro. Now let's move to the next slide and understand how to register Jutro. It's a very simple process. So one way is you can simply go to patient portal, and on the patient portal you can select your location, then Jutro and doctor, and then register, and you can sign in declaration using the patient portal from trusted profile, and then you can register. That is one way. This is how I did in the beginning. But when my wife visited, she visited the center and she directly registered it there. That is another way, because she doesn't have the trusted profile. And third way is you can click on the link if you have a trusted profile. So when you click on this link,
you get a window like this where you fill in all the information, and after filling the information you can choose your doctor and nurse, and then you can click on join with the trusted profile, and then that's all. When you will click on join with the trusted profile, it will ask you to sign the declaration online, and that's all. After that you will download the application, you will log in with your username and password, and when you have done it, you're done. But when you have done it online, always remember that for the first consultation or visit, you must visit the branch, and later all consultation and test can be done using the application. This is a requirement. Now, if you do not have trusted profile, you can visit their center, tell them about this video, that you have seen this video and there's a referral code called Kumar. You can give this code at the reception, and you can physically visit there with any of the ID proofs. Don't forget to carry any ID proof, and then you can register there. So I told you three ways. Number one, using the patient portal. Number two, using the referral code link, which you can find in description. And number three, by visiting the center and give them the code Kumar, tell them about the video, and they will take care of you. Now, coming back to the topic, so now we know how to register Jutro. It's so simple. Now understand what are the benefits and what Jutro can do, what it cannot do. Okay, so situation for the people, as I explained earlier, who do not have a private healthcare provider provided by their employer, they can use Jutro under NFZ. They have a good English speaking doctor, and Jutro is an alternate option. To others compared to other service provider available in 8 cities, and currently I know that 25 English speaking doctor, obviously they are expanding, so they will have more, and I will share that in the description. But what are the limitations? Currently Utro is just providing the pediatric and gynecology services, but not providing, sorry, it's not providing pediatric and gynecology services. But I have told them that yes, we are in need of gynecologists and pediatrician, and they are working on it, and maybe soon they will have it. So you can check their website or their application, and I'm sure they will have it soon. But they are currently providing the only family doctors and internal disease doctors. So hence Jutro is also allowing to register their kids to the family doctor, as family doctors in Poland are allowed to see the children. But currently they are operating this particular thing in some of the cities. So of course we need to check their website, and soon if they start, then it will be a one-stop solution where you can visit to your family doctor with your children at one place. So you don't have to book appointments separate for the children, separate for the parents. You can visit in one go, book all the appointment together, and that is what is the main purpose of family doctor here. So hopefully when they start these services soon for children also, we will get to know from their application and website. But so far, whosoever I have sent to this place, I have never been disappointed. Take my words on that. Now let's understand what is the difference between family doctor or internal disease doctor. So in family doctor is a person like who can see the children also. Snake bite issues can also be seen by a family doctor, while internal disease doctor can see only adult patients, okay, no children's. And they are basically going to see what is going inside your body, basically specialists of internal disease. So family doctor can be seen by all patient of all ages, while internist and internal medicine doctor can see only adults. Then they provide their focus is comprehensive care in family doctor, while internist and internal medicine doctor have complex medical conditions or comprehensive care and subspecializations they have in some certain field. There's education patterns, and mostly you will see family doctors in the outpatient clinic, while internists and internal medicine doctors can be seen in hospital quite frequently, and most of the time you will see them in hospitals. So because internists have specialized training and experience to manage complex medical conditions, so that's why they are commonly seen in emergency hospitals, especially you will see in mostly internists. Sometime back when I came to Poland, I had a perception that internist means people or under practice doctor who are under internship, which is totally wrong. It is not like that. Internists are the specialized doctor who can see your complex medical conditions, and that's why they are mostly in the hospital, uh, can be seen to see the hospitalized patients. Uh, but yes, family doctors mostly focus on outpatient care. So I hope this confusion is clear today. At least I had this confusion for quite a long time. Thanks to Dr. Piotr for clarifying this doubt, and also Magdalena, because we had several discussions to understand this topic. Now let's understand what is SOR. Very simple. SOR is basically emergency department, where you can
especially in the life-threatening situation, you can call SOR. It is free for all, even without NFZ. If you don't have NFZ in life-threatening situation, you can call 112 and you can enroll the people to SOR clinics. And 999 is basically a direct number for health emergency, but I got to know soon it may not be there, but I'm not sure. You can check the website of patient portal. It will show it clearly, but 112 is something which you can use for fire, for police, and for other help. Okay, and definitely you can explain the situation. You can request English speaking doctors or the consultant, whosoever is comes on the phone. So as I've explained previously that why Jutro, because of obviously English speaking doctor, that's a good reason. Approach of staff towards the patient is very friendly, they treat with respect and dignity. I'm not saying other service provider doesn't do that, they do, but at the same time this is something which you don't have to separately pay and get this service provider, because you can book them under NFC. And so far this is based on the experience for 1000 plus families across Poland. I know in personally touch, and most of the people I have sent there so far, I have got very good feedback, even when I didn't had any collaboration with them. Now, they have modernized application to manage whole process of healthcare. They have easy way to communicate and to register due to app. You can write on the chat window with doctor or assistant, and generally they provide high standard of care, and they have internal quality control and compulsory courses for the doctors, open-minded staff, and no need to worry that someone will not treat you with respect or because you're a foreigner, because definitely I'm sure you must have come across somewhere at some place in your lifetime with such situations. So here they say they have zero tolerance for this, especially for racism, holophobia, or no matter how do you look like or where you are from, you will be treated with respect as per the commitment from Magdalena, which is influencer marketing manager. And she has very clearly said that if you come across any such situation, do let me know. We have zero tolerance for that. So that gives me little relief and satisfaction. And about the application, I'm very impressed with the application, because you can talk to the doctor, you can book appointment, you can book teleconsultation, you get the results, everything you can do on the application itself. Not only that, you can also book the paid test or budget interested test using the application, and you can use my code DS20 to get the discount. But there are no language barriers. If you don't know the their language, you can type that and then you can translate. That is another option in their applications. So far, uh, so as I said, currently they do not have gynecologists and pediatric services, but they are expanding, and as per my communication with Magdalena, they are definitely going to start at least children services at services for children's at the clinic, because family doctors can see children. And so far I have received 100% successful results and feedback about all the doctors across Poland who serve at Jutro, helping and supporting patients in need. And I personally strongly recommend them to be appointed, which I have been doing for last 1 year when I had no collaboration. So as you know, my services are mostly selfless, and that is the reason I promote this application even before the collaboration from last 1 year. And it had simplified life of a lot of people, because many times if you take a referral from the private clinic, you go to the government hospital. I've seen situations where they deny to see the patient. Uh, so in that situation, if you get the same referral from your family doctor, that is something which gets considered in most of the public hospital. That's my personal experience in many scenarios I have come across in last 2 years. So that's why your family doctor is a very important person for you, who knows about your medical situation and can route you to the right path. Especially Dr. Piotr, whenever I visit, he will refer to the hospital. He will tell us these are the list of hospital. Here you will find English speaking doctor. Here you have appointment of this, which is really amazing. I mean, I have not seen people providing so much of personalized services, and it's not me only. Everybody who visit them, they get these kind of services. So that's why now here, so this is the reference link. You can check in the description. You can click this to register to Jutro if you have a trusted profile. If you don't, then you can visit them and tell them about your video, this video, and tell them the referral code Kumar. They will register. And third is this link for the marketplace where you can book the paid test. You can use Dheeraj20 as code, and when you do that, you get 20% discount on all the paid tests. So, and yes, this discount code DS20 is not applicable for the gift voucher. This bon present print pen presentovi means it's a gift voucher. So on this discount code is not applicable. But if you take a test like this and use code DS20, you can see this discount will be applicable for 20% on these tests. These are the centers where currently they are operating. So
most of the major cities are there, and these are the list of English speaking doctor as per your city. You can choose and you can just tell them. So thank you for watching. If this video has helped you, please at least comment below. It's free. Acknowledging the same is your return of the work we put in making these videos. And obviously, it motivates. And at the same time, I don't emphasize people to like, subscribe, or share, but mostly this video I will request you to share with people in need, because this definitely may change or help someone in need. Like it took 2 years for me to get a family doctor, but for you, even if you're new in Poland, and if you're following this video, this will simplify your journey. Please bookmark this playlist of medical system in Poland, because medical part 1 has covered about most of the things about family doctors or medical system in Poland, and this is about Jutro. And third is medical part 2 is about NPL, SOR, clinic, emergency hospitals, how you can avail. This is going to be very important video. One of the friends from the group, he requested that, sir, please make a video on pregnancy in Poland. You will get a lot of blessings from a lot of mothers and sisters. So I really thank for the suggestion. I am definitely on the way to make the video on this topic, but definitely I need some doctor consultations to verify my content before I upload it, and that's why it's getting delayed a little bit. But definitely you can reach out to me in the comment box, or you can drop me a message on WhatsApp, and that way I help people unconditionally. So please bookmark this playlist. Please like, subscribe, and share this video with all the people in need. And from here I'm going to continue in Hindi, so you can drop off here. So now I'm going to start in Hindi. Namaskar dosto. Welcome back to Medical System in Poland Part 1.1. This is sponsored content. मार्गदर्शना और डॉक्टर पियोटर को बहुत बहुत धन्यवाद इस कंटेंट को स्पॉन्सर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से मैं कंटेंट बना पाया हूँ. और एट द सेम टाइम कुछ समय पहले हमारे एक दोस्त ने एक सवाल किया था कि यूथ्रो क्यों, जब इतने सारे एनएफजी सर्विस प्रोवाइडर हैं. और आज के टाइम में डेफिनेटली कुछ वेबसाइट्स है जो मैं मेडिकल पार्ट 2 में आपको बताऊंगा, जहां पर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्टर का फीडबैक कैसा है और ये इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता है, सो दैट यू कैन चूज द डॉक्टर. डेफिनेटली दैट इज वन वे, एंड आई अप्रिशिएट दैट सजेशन बाय द फ्रेंड. बट क्वेश्चन इज, मैंने 2 साल में ये चीज क्यों नहीं करी? क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने पेशेंट पोर्टल से बहुत बार फैमिली डॉक्टर अपॉइंट करने की कोशिश किया, लेकिन जब भी मैं करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या आता है कि वहां से जो कॉल आता है पॉलिश में आता है और मेरा कॉल उनका जाता है. हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते और इस चक्कर में कभी हुआ नहीं. अनदर रीजन इज, मेरे पास ऑलरेडी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर था मेरे ऑफिस की तरफ से, तो मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी. बट डेफिनेटली मेरी पिछली कंपनी में मेरे को जो सर्विस प्रोवाइडर मिला था वो इतना अच्छा नहीं था. आज पेट में दर्द है तो 14 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दे रहा था, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट. उस टाइम पे मैंने अपनी वाइफ को यहाँ पर भेजा इसका रिसर्च करके, एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. सिर्फ 2 आवर्स में अपॉइंटमेंट भी मिला, एंड इट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने इस कंटेंट को और इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया, और मैंने 400 से ज्यादा लोगों को इस जगह भेजा, और मेरे को आज तक कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला. तो पहला रीजन यूथ्रो क्यों मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे ग्रुप के 400-500 लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. दूसरा, मुझे पता है कि यहाँ पर ये 25 डॉक्टर जो है इंग्लिश स्पीकिंग है और जो आगे एक्सपेंड हो रहे हैं, तो मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट आएगी जो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट करूंगा. तो यानी मुझे ये मेहनत नहीं है, ये डाउट नहीं है कि जो डॉक्टर मैंने फैमिली डॉक्टर के तौर पे चूज किया है वो इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता. यानी ये कंफ्यूजन ही खत्म है. और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इनका एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप प्राइवेट कंपनीज में आप किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करते जहां पर आपको प्राइवेट प्रोवाइडर नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते हैं. एनएफसी तो आप लोग पे कर ही रहे हैं ना, सोशल सिक्योरिटी यूज वगैरह पे कर ही रहे हैं, तो ये बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए. तो यूथ्रो में सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्टर करो और आपको वही सारी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटी यहाँ मिल जाएंगी. सारा कंसल्टेशन, टेस्ट, रिपोर्ट सब एप्लीकेशन में मिलेगा, वो सब एनएफजी में मिलेगा, आपको सेपरेट पे करने की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक इतने रीजन काफी है यूथ्रो सजेस्ट करने के लिए कि क्यों मैं यूथ्रो प्रमोट कर रहा हूँ. बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सर्विसेज अच्छी है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स की लिस्ट है मेरे पास, तो मुझे कंफ्यूजन ही नहीं है कि जो सामने वाला डॉक्टर वो मुझे समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा. पर्सनलाइज असिस्टेंस भी मिल जाती है और सभी को मिलती है. मेरा फीडबैक बहुत अच्छा रहा है लोगों से, इसलिए हम यूथ्रो को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब इसके बाद आता है कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो भी आप यूथ्रो को एनएफसी में कर सकते हैं. और दूसरा, इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है और कंट्रोल ट्रीटमेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, तो इस वजह से हम यूथ्रो को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर. अब आते हैं कैसे करना है. कैसे करने का 3 तरीके हैं. पहला है, आप पेशेंट पोर्टल पे जाइए, वहां पर आप इनका सेंटर, जो भी आपका लोकल सेंटर है उसको चूज कीजिए, और चूज करने के बाद आप उसको ट्रस्टेड प्रोफाइल से डिक्लेरेशन को साइन कीजिए. एक तो तरीका ये पेशेंट पोर्टल वाला. चलो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई बात नहीं जी,
आप सीधा इस लिंक पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, सिर्फ आपको एड्रेस, नाम, फोन नंबर, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने का आएगा और नीचे ज्वाइन विद ट्रस्टेड प्रोफाइल आएगा। तो आप ज्वाइन विद ट्रस्टेड प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिकली आपका एक एप्लीकेशन साइन इन डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। साइन इन डिक्लेरेशन कीजिए एंड देन एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कीजिए और वहां पर लॉग इन कीजिए, हो गया। अगर ट्रस्टेड प्रोफाइल नहीं है तो क्या करें? तो तीसरा तरीका है, आप किसी भी यूट्रो सेंटर जाके इस वीडियो के बारे में बताइए कि ये वीडियो आपने देखा है और ये कुमार जो है रेफरल कोड है। अगर मना करे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी ने मना किया, बिकॉज आई हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद मगदलेना फ्रॉम यूट्रो एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। तो मुझे जरूर बताइए अगर ऐसा कुछ होता है तो और वहां पर जाके आप हाथों हाथ कोई आईडी प्रूफ जरूर लेके जाइएगा और वहां पर आपका हाथों हाथ काम हो जाएगा। तो ऐसा विंडो आता है जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा एक विंडो आता है, इन्फॉर्मेशन भरी है। उसके बाद ऐसा एक विंडो आता है, यहाँ डॉक्टर आप यहाँ चूज कर सकते हैं और ये आपके नर्स को चूज कर लीजिए और ज्वाइन विद ट्रस्टेड प्रोफाइल कीजिए, बस। ठीक है। और उसके बाद आप ई साइन कीजिए ट्रस्टेड प्रोफाइल से और देन दैट्स ऑल। तो आपका हो जाएगा ये। उसके बाद आ गया, अगर ट्रस्टेड प्रोफाइल नहीं है तो कुमार रेफरल कोड देके ब्रांच विजिट कीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपने पहले बार ऑनलाइन डिक्लेरेशन साइन किया है तो आपको फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद के सारे कंसल्टेशंस, रिजल्ट्स वगैरह सब आपको एप्लीकेशंस पे मिल जाते हैं। उसके बाद आपका ये तो आपका प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूर है। करेंटली ये लोग फैमिली डॉक्टर, इंटरनल डिजीज डॉक्टर सर्विसेज ही दे रहे हैं। इनके पास अभी गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक सर्विसेज नहीं है, लेकिन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑल दीज थिंग्स आल्सो। जितना जल्दी हो सकता है, कोई टाइम फ्रेम कमिट नहीं किया है, बट हाँ ये अभी एटलीस्ट इतना सर्विस स्टार्ट करने की कोशिश करें कुछ सेंटर्स में जहां पर आप बच्चों को दिखा सकते हैं। पीडियाट्रिक सर्विसेज नहीं है तो भी, क्योंकि फैमिली डॉक्टर जो है पोलैंड में वो बच्चों को देख सकता है, तो इसीलिए वो अभी ट्राई कर रहे हैं। बट जैसे ही अनाउंस होगा आपको इनके एप्लीकेशंस और साथ में आपको इनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। ये हमने डिफरेंस समझने की कोशिश की है कि फैमिली डॉक्टर और इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर में डिफरेंस क्या होता है। फैमिली डॉक्टर जो है बच्चों को भी देखता है, बड़ों को भी देखता है, जबकि इंटरनिस्ट और इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर जो है एडल्ट्स को नहीं देखते हैं। कॉम्प्रहेंसिव केयर देता है फैमिली डॉक्टर, जबकि इंटरनिस्ट और इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर जो है कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, इनका ट्रेनिंग पीरियड्स है और साथ में आउट पेशेंट क्लिनिक्स जो है वो मोस्टली फैमिली डॉक्टर आपको मिलेगा, जबकि इंटरनिस्ट और इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर जो है वो आपको हॉस्पिटल्स में दिख रहे हैं। तो मैं, मेरा एक पहले मिसअंडरस्टैंडिंग था कि जो इंटर्निस्ट है, इंटर्निस्ट का मतलब हम लोग ऐसा समझते हैं जो इंटर्नशिप में है, वो गलत है। ऐसा नहीं होता है। इंटर्निस्ट जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जिनको स्पेशल कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस के लिए ट्रेन किया जाता है और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनको। तो इसीलिए वो मोस्टली आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये कंफ्यूजन आई होप आज के बाद आपकी क्लियर हो, मेरी भी इस वीडियो को करते टाइम क्लियर हो। थैंक्स डॉक्टर पियोटर फॉर हेल्पिंग मी क्लियर सो मेनी कंफ्यूजन्स। एंड एसओआर क्लिनिक्स होते हैं, इमरजेंसी क्लिनिक्स आपके, जिसमें आप 112 पे कॉल कीजिए। वैसे 112 फायर एंड पुलिस एंड बाकी हेल्प्स के लिए भी है, लेकिन 112 में आप कर सकते हैं। एसओआर क्लिनिक्स बेसिकली उनके लिए भी है जिनके पास एनएफजी नहीं है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, हार्ट अटैक वगैरह हो गया, एक्सीडेंट क्रिटिकल हो गया, इन सब केसेस में आप यूज कर सकते हैं। 999 डेडिकेटेड नंबर था, बट आप इनकी वेबसाइट पे चेक कीजिए, पेशेंट पोर्टल पे ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन 112 है। 112 पूरे यूरोप में वैलिड है, नॉट ओनली इन पोलैंड, पूरे यूरोप में। तो आप इस नंबर को हैंडी रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के लिए। ठीक है। उसके बाद यूत्रो का कंपैरिजन मैं बाकी प्रोवाइडर से करना नहीं चाहता। सभी प्रोवाइडर्स अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुझे मागदलेना जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर, उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ पर आपके सारे पेशेंट्स को रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी से ट्रीट किया जाएगा। और डॉक्टर्स आपको चैट विंडो पे आप लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वहां भी समझ सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स तो इनके पास अच्छे खासे हैं। रेसिज्म, होलोफोबिया या कोई भी कैसे भी आप लगते हो, उस सबसे इनको कुछ लेना देना नहीं, दे विल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट। क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स मुझे सुनने में आए थे ऑल अक्रॉस पोलैंड जहां पर ये प्रॉब्लम्स हुई थी, तो यहाँ पर इनके लिए जीरो टॉलरेंस है। और इन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इसे रिपोर्ट कीजिए, विल टेक केयर ऑफ इट। हम वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दैट। तो इसलिए एक सबसे बड़ा रीजन है जो हम यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड एडवांटेजेस जो है यूट्रो ऐप का, यूट्रो ऐप का जो है, इसका हेल्थ डेटा जो है वन प्लेस पे रहता है। आप चैट विंडो में और अपना रजिस्ट्रेशन के बाद आप अच्छे से अपॉइंटमेंट वगैरह सब चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अभी इनके पास गायना एंड पीडियाट्रिक सर्विसेज नहीं है, तो डेफिनेटली आगे आएगा तो इनकी वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस पे आपको पता चलेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी तक मैंने जितने लोगों को यहाँ पर रेकमेंड किया है, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक सुनने को मिला है और बहुत ही अच्छा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा भी रहा है कि मैंने, जितने मेरे दोस्त हैं, उनको हॉस्पिटल्स में जब रेफरल किया गया तो एक लिस्ट होती है, उसमें फिर बताया जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लिखते हैं रेफरल्स हॉस्पिटल में तो कंसिडर नहीं करते, लेकिन आपके फैमिली डॉक्टर ने लिखा है ना जो पीओजेड में रजिस्टर्ड है, तो उसका रेफरल डेफिनेटली पब्लिक हॉस्पिटल्स में मानना पड़ता है।
ठीक है, तो मुझे तो लिस्ट बना के दी जाती है, फिर बताइए ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ आपको इस दिन का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह का असिस्टेंस मेरे को देखने को मिला है, नॉट एज अ इन्फ्लुएंसर बट ऑल्सो इवन टू ऑल अदर फ्रेंड्स हु डू नॉट who are not influencer. Everybody get these kind of supports. So that was very impressive for me, and that is why I really like this features of this service of this company. एंड एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने बताया, ये रेफरल कोड का लिंक है, जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर धीरज लिखा आना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप उसमें डिटेल्स डालिए। दूसरा हो गया आपको धीरज 20, अगर इनका पेड टेस्ट यूज करें इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप फिजिकल विजिट करें तो कुमार कोड बोलना ना भूलें, एंड उसे इस वीडियो के बारे में बताइए उनको, दे विल टेक केयर ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो लेकिन जो आप गिफ्ट वाउचर जो आप यूज करें धीरज 20 डिस्काउंट कोड, वो गिफ्ट वाउचर्स पे काम नहीं करेगा। यानी जिन भी पैकेजेस के ऊपर ये लिखा है बोन प्रेजेंट टॉवी, विच इसका मतलब है कि गिफ्ट वाउचर, ठीक है, तो इस पे ये काम नहीं करता है। लेकिन जो टेस्ट है, बजट इंटरेस्टेड टेस्ट है, उस पे आप जब करोगे ऐसे धीरज 20, तो ऐसे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 20% का। तो ये आप रेफरल कोड ले सकते हैं। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के शेयर कीजिए जिनको हो सकता है जरूरत पड़े, जिनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। ये सारी सिटीज है जहां पर ये अभी कभी ऑपरेट कर रहे हैं, और ये लिस्ट है आपके डॉक्टर्स की, जिसमें जो इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स है पूरे पोलैंड में। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर ये ऑफ कोर्स आपके लिए फ्री है, हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन भी होता है, एंड डेफिनेटली इससे ज्यादा लोगों तक इस वीडियो के रीच होने में हेल्प मिलती है, जिससे ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। और कोई रीजन नहीं है जिसके लिए मैं बोलता हूँ, बिकॉज आई डोंट डिपेंड ऑन यूट्यूब, एज यू ऑल नो आई एम एन IT प्रोफेशनल, इट डजंट इवन मैटर टू मी, बट what matters is if this video reaches to the right needy people, this will be definitely helpful for them. इस प्लेलिस्ट को, जो मेडिकल सिस्टम इन पोलैंड है, इसके प्लेलिस्ट को प्लीज बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल पार्ट 2 और प्रेगनेंसी इन पोलैंड सबसे काम का वीडियो होने वाला है। आई नो 70-80 लोग जो क्रैको में ही है, उनका दे आर गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी, एंड डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प देम। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई फीडबैक हो, कमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट भी हो, कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट भाई। एक आधा डिसलाइक वाला बंदा है जो हर बटन डिसलाइक का दबाता है, मुझे नहीं पता उसे क्या खुंदस है मुझसे, लेकिन एट द सेम टाइम लाइक वाले बहुत सारे लोग हैं, और आप लोग जो सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वीडियोस में कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको कोई भी फीडबैक हो, कंप्लेन हो, सजेशन हो, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा लेट्स stay in touch, let's help each other, let's make the world more beautiful. Thank you so much for watching. Do Goodbye. Jai Hind.